सब रूहे ईमान नूरे रमजान। आपको हम एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान और अभी जो हमारे साथ एक सेलिब्रिटी गेस्ट है वो उन्होंने फ़्लाई किया है दुबई से स्पेशली ईद मनाने और रमज़ान को कहते हैं ना कि देखने के लिए, विटनेस करने के लिए लाहौर आई हैं। और अगर इन्फ्लुएंसिंग की बात करें, ब्लॉगिंग की बात करें, मॉडलिंग की बात करें और भी काफ़ी चीज़ें शी डज़। So I'm talking about one and only one of my good friend and you know my Dubai partner. I want to introduce Sarah Shareef. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sarah. Good to have you over here. Thank you so much. आपने वक्त निकाला और ज्वाइन किया हमें. Thank you so much, Smile and Hannah, for inviting me over. Yeah. Sarah, you left Pakistan and we were studying together in Beacon House National University like long time back. So Dubai जाके settle होना and working for brands, how it goes about? So Hannah, I was born and raised in Dubai. मैं पैदा ही उधर हुई थी, पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजारी थी. It was just a little time जब we decided कि you know we should move to Pakistan, and that's when I was doing my master's degree from DNU when I met you. Yeah. So I think degree करने के बाद I decided कि अच्छा अब वापस जाना चाहिए and start working in Dubai, and since then I've been there. So I think Dubai is home. पाकिस्तान आते हैं कभी-कभी चक्कर लगाने के लिए. It's always nice to stay in touch with your roots, but Dubai is home. Obviously Dubai is home. You've been like born and raised over there. Brands के बारे में बताओ. इतने brands हम देख रहे होते हैं और social media पे you're endorsing a lot of brands and you know चाहे वो like Western brands हों, Eastern हों या Arabic brands हों. तो how do you feel being a Pakistani endorsing such an international level brands? What do you feel about it? I'm so happy. In fact, मुझे कोई मिलता भी है वो मुझसे पूछते हैं कि where you're from. I'm really proud of the fact that I'm from Pakistan and I represent Pakistan as well. Recently, I was in London and we were hosting one of the events in London for all the flood victims. So it was a fundraising event. Yeah. So we, Asfar Rahman was with me, and I think काफ़ी funds हमने पाकिस्तान के लिए किए थे for all the flood victims. Well, looking at this work, I was actually hosting for Dubai Police and Dubai Municipality. Again, it was a charity event on the UAE National Day. It was for all the people who work really hard in Dubai and how we encourage them to be entrepreneurs while they are not working. So in the morning, they have their own work as laborers or whatnot. And there's another charity organization, them and Dubai Police. We help them to be entrepreneurs in the evening and earn their own money. So उनको pretty amazing. That's actually very wonderful. अगर हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे उससे पहले मुझे बताएं पाकिस्तान आई है, रमज़ान मुबारक का महीना जारी है. How did you find it? कैसा लगा रमज़ान, कैसे गुजरता है आपका, क्या मसरूफियात रहती हैं? अच्छा लगा रमज़ान कि obviously दुबई का रमज़ान अच्छा है. Like you can compare a little bit of it. Well, यहाँ का रमज़ान I believe it's very quiet. Dubai ka Ramazan is more like it's Ramadan. It's Ramadan. So Dubai ka Ramadan is more, I would say, festive because very happening. Very happening. So we already have plans and events going on for Fendi, for Gucci. सबके अलग-अलग रमज़ान मजलिस चल रही होती है. So हमें पता होता है आज हमने इफ्तार पे जाना है, शाम में हमने सहूर पे जाना है. So it's every day you're packed from one brand to another. So much of promotions going on and the malls are like full of rush because there's so much of festivity in Ramadan and Eid is coming so I think the Ramadan का जो spirit है थोड़ा नजर आता है, but Pakistan में भी you know now it's a lot of festivities going on nowadays. Right. So you must be a part of it now. Yes, I would actually like to see because उसके लिए मेरा एक ही दोस्त है पाकिस्तान में, वो है ना. कल in fact कल मेरा पहला दिन था पाकिस्तान में, मैं गई बाहर. So I felt it was a bit quiet. But again, crowds का पता होना चाहिए आपको. बिल्कुल ऐसी है आपको. You should know the right places कि जाना कहाँ पे, वही ना आपको जरूर लेके जाएगी. ईद आ रही है और ईद के साथ आते साथ ही जो एनर्जी है लोगों की वो बढ़ती जाती है. रमज़ान मुबारक के जाने को ऑब्वियसली थोड़ी सी सैडनेस होती है और जैसे जैसे आपकी ईद पास आ रही होती है फेस्टिविटीज़ के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है. आप अफ्तारी के बाद निकले तो आपको नजर आएगा कि मॉल्स के अंदर ड्रास्टिक इंक्रीज है, रश ज़्यादा हो जाता है. जाके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं कि कैसे जा रही है अब तक का एक्सपीरियंस, जर्नी कितना रहा है, कैसा रहा है. इस्माइल पूछना चाह रहा है कि one thing we can extract from your social media, you're always surrounded with a lot of actors, international actors. Let's talk about it. How do you do that? So of course, because I was born and raised there, so I do have connections in. I know where you're going, but. So आपके जितने भी favorite celebrities जिनसे मैं मिल चुकी हुई हूँ. I've also been invited at IFA Awards. So I was covering their green carpet. Yeah, I know. And inshallah this year as well.
So I think ये एक फ़ायदा होता है when you are working in Dubai, you get more opportunities, especially to work with local artists and international artists as well. Like I've shot for RAG government as well. So you know, when you're living there, I think Dubai gives you a lot more opportunity. I don't think actually it does. So cross border interactions जो बढ़ जाती हैं exactly. So it's nothing to do with Indian or Pakistani Not or where you're obviously. from. An artist is an artist. Even if you're not an artist, even you're just an influencer, I think it's one of the places where you're welcome. Everyone around. Wholeheartedly. Any incident you remember while working for an international brand or a local brand, and they got to know that you are an Asian or you're like a Pakistani, you know, and endorsing such a big brand, you know, I always have seen like inverted commas when are you a Pakistani, and you know you're doing this. So it's very common practice going on. Any incident you remember? Honestly, no, I don't remember. I don't remember as such के जहाँ पे बहुत कभी हाँ अगर आप बात करते हैं ओ अच्छा you're from Pakistan, but it's not like बहुत extreme नहीं हुआ, खुशी से देख रहे होते हैं, बहुत खुशी से देख रहे होते हैं. In fact, my Indian friends they love me, and it's so funny actually. Ismail, जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, and a lot of my friends from India got to know that I'm in Pakistan, and the ones who live in India, they've called me. उनको लग रहा है कि मैं इतनी करीब आ गई हूँ कि ओ तुम दुबई में हो, तुम इंडिया, तुम पाकिस्तान में हो, तुमको लगता है कि हम इतने करीब हैं, और बहुत मोहब्बत है ना, इतनी मोहब्बत है कि you know sometimes हम जब इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, so they are like celebrities as well. If you who tell me कि प्लीज सारा आप उर्दू में बात करें, because आप लोगों की उर्दू इतनी खूबसूरत है कि हमें बहुत कम मिलता है ये सुनने को. So इस तरह के incidents मिलते हैं जहाँ पे you know we really appreciate each other and we want people to grow, and it's all about love, unity, peace. So you can be an ambassador of a peace mission, because you know you've been seeing the both societies and you know visiting the countries as well. Right. So how about if अगर कोई कभी जिंदगी में मौका मिले कि being a peace ambassador, तो what will be the first thing you're gonna do that? What will be the first thing you're gonna do that, being a peace ambassador? I think we will do a collaboration between two countries if that's what we're talking about. इस तरह के बहुत events होते हैं दुबई में actually. जैसे इवन फॉर दैट मैटर वो हमारे साथ ईद मनाते हैं, वो हमारे साथ रोज़ा खोलते हैं, बिल्कुल ऐसे है. हम उनको अपने फेस्टिवल्स में इनवाइट करते हैं, एंड दे होल हार्टेडली कम, दे लव इट, और वो एहतराम बहुत करते हैं. कभी कभी हमें लगता है हमसे ज़्यादा वो इन चीज़ों का एहतराम कर रहे हैं कि आपके सामने खाना नहीं, आपके सामने पीना नहीं है, अगर कर लिया गलती से तो सॉरी करना. तो उसी तरह हम चाहते हैं कि हम उनके लिए करें. और ऑब्वियसली जब हम क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शंस की बात करते हैं तो हमेशा पीस, हार्मनी और ब्रदरहुड का मैसेज ही जाना चाहिए, बिकॉज इतने ज़्यादा आपके कल्चर जब सिमिलर होते हैं तो फिर ऐसे ही हो सकता है कि आप जब मोहब्बतें बांटेंगे तो आपकी हर सुबह जो है वो ईद होगी और आपकी हर शाम जो है वो दिवाली होगी. हम मोहब्बतें बांट रहे हैं, छोटी सारा सी हमारे साथ है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं हमारे साथ. अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान. अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. आप लोग देख रहे हैं नूर रमज़ान. हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही ख़ास मेहमान सारा शरीफ. दुबई से स्पेशली फ़्लाई करके यहाँ पे आई हैं और हमें इन्होंने वक्त निकाला है. सो वी फील वेरी प्रिविलेज. तो मुझे बताएं कि आपके इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी देखने में नजर आई जिसके अंदर आपको कोई आप रमज़ान डिनर या लंच या कोई इवेंट था जो कि इंडिया की जानिब से होस्ट किया गया था. व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? मतलब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे इतना पता चल रहा था कि रमज़ान का इवेंट है और क्रॉस बॉर्डर है. और व्हाट वाज दैट अबाउट? So this channel called Colors TV, it's Colors TV Middle East and India. तो उन्होंने काफ़ी influencers बुलाए थे अपने शो में, and we were hosting with one of the chef and one of the hosts. So I was one of the guests. तो इसी तरह जब हम बात कर रहे थे cross border relationship की, तो काफ़ी जो influencers थे, one was from Dubai, the other was from India. If you know that girl, Jalebi Baby, yeah, she was also there. She's a very good friend. तो इस तरह काफ़ी ब्लॉगर्स आए थे, एंड आई वाज वन ऑफ द पाकिस्तानीज हू दे इनवाइटेड, एंड उस शेफ के साथ यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ रमज़ान इज़, हाउ बीइंग अ फूड ब्लॉगर कौन से हम रेस्टोरेंट्स को कवर करते हैं, क्या उसकी पूरी जो है ना तैयारियाँ होती हैं, स्टफ लाइक दैट. एंड ऑफ कोर्स पूरा शो जो था वाज ऑल अबाउट फूड,
and That's very culture and places that you would like to travel. तो वो एक अच्छा experience था and it's played. तो आप लोग places जरूर you would like to देखिएगा. travel बता दें, फिर हमें भी बता दें viewers को, हमारे audience को, what are the places that you would like to travel? Yeah. That I would like to travel. Okay, for the places that I have not traveled, probably I would love to go to Switzerland. That's very I would nice. love to go to Mexico, and because I love Mexican cuisine. And yeah, Baki, I think I've traveled quite a lot. I would love to go to Amsterdam. So there are a few Amsterdam places is I would amazing. love to. Yeah, I've been there. It's amazing. Yeah. Amazing. Yeah, yeah. तो वो पूरा शो उसके ऊपर बेस्ड था कि आपकी कौन सी जगह आपकी फेवरेट है, उसके ऊपर जो शेफ है वहीं पे ही आपकी very फेवरेट nice. कुजीन Very nice. को क्रिएट करती है. Very nice. And nice. also knowing your childhood, favorite food and stuff like that. वो पूरा एक फ्यूजन होता है अच्छा, खाने very का. nice. Basically, it could be desi, it could be Arab, and it could be also places that you like to travel or countries. So I think since you're over here, ये तो हिना की ड्यूटी बनती है कि हिना आपको इनवाइट करे और यहाँ की डिफरेंट फूड्स जो हैं वो आपको खिलाए और स्माइल एक्सपीरियंस ऐसी करवाए. बात नहीं है, ड्यूटी तो आपकी भी बनती है. स्माइल ने साथ इतनी बचत कर ली ना कि मुझे पैसे ना खर्च पड़ जाए. नॉट एट ऑल, मैं तो हिना की तारीफ करने जा रहा था जाके. नहीं, मैंने fine, अगली बात जो करनी थी fine. कि हिना जो है बहुत ज्यादा वेलकमिंग है. मेरा पॉइंट ये था, आप नहीं चाहती तो मैं नहीं करता अच्छा, जाके. तो अब सारे जो लोग देख रहे हैं वो याद रखें, मेरा एक जो दावत है हिना पे बनती है, इधर इफ्तार और सहूर, एंड एक इस्माइल बनती है Done, done. कोई भी ईद का डिनर. Definitely we would love to host you. हमें हो सकता है हम इकट्ठे ही कर लें आपको. We would love to do that. ईद आ रही है, ईद की तैयारियों के बारे में बताएं. Are you in shopping? देसी आउटफिट्स में क्या पसंद है पहनना? क्या खाने को पसंद है? होते हैं ना कि क्योंकि obviously you coming back to your roots and there's something very special you always miss about. What is it all about? I love देसी फूड. तो देसी फूड में आप मुझे आलू के पराठे दे दें, चिकन कढ़ाई दे दें, मटन, कोई भी, Nice, मतलब very nice. anything. मेरा कोई I'm not finicky about anything. Very good. And fashion में of course शलवार कमीजें बहुत अच्छी लगती हैं. हार्डली हमें मौका मिलता है वहाँ पहनने पहनने का. का because of our work. And That we can see you today. so I'm really enjoying wearing this desi attire, and thank you so much A+ for giving me this gajra. Especially मैंने हिना से ले लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये. मैं as a souvenir I think अपने साथ लेके बिल्कुल जाऊँ. Definitely you should तो take this. और मीठे में मुझे फालूदा बहुत अच्छा लगता है. तो हिना आपको पता है फिर आपने क्या Definitely, मनवाना we'll definitely make you eat faluda from somewhere very special. Trust me. है. तो हाँ, any sort of food, fashion, everything. I अच्छा, love it. how about your family? कहाँ होते हैं? Like your parents, लाहौर में, they were there ना earlier. Yeah. उसके बाद. So again, born and raised there. So my grandfather moved right to Dubai. So my parents been living there. They've been working there. My father passed away. So that's about it. But हाँ, हमारा पूरा बचपन वहीं पे गुजरा है. So I think हमारी पूरी memories जो हैं वो अब दुबई से ही हैं. Anything and everything. I think पाकिस्तान ये आते हैं हम थोड़ा बहुत पता चल गया पाकिस्तान का. पहले हम आते थे तो it was very easy for people to sort of bully us. Now I know a lot more, I think. पहले ये होता था कि आपको मजाक नहीं पता. अगर मेरा cousin देख भी रहा होगा, he lives in Canada now, वो मुझे कोई ना कोई prank करता था मेरे पे और बाद में बोलता था सारा रो पड़ी, and I would actually start crying because we didn't know how to handle it. So I think, yeah, there are times people I bully think you. Pakistanis are much street smart if you Yes. are saying like Yes, that. Okay. they are. They They are a are. lot street smart, but they're also very lallu when they go to Dubai. हाँ. मैं कहने लगा था इतने स्ट्रीट स्मार्ट हो तो हम इतने पीछे ना हो. हम स्ट्रीट इतने स्मार्ट है पीछे लेकिन ना नहीं. डायरेक्शन की थोड़ी सी पता नहीं है डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन लेस है. वो बताना है और बस थोड़ा सा अपने सिखाने मुताबिक स्ट्रीट स्मार्ट है यहाँ तक, बट यहाँ पे टैलेंट ये- और पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है. बट देन अगेन बात वही है कि If आपको you're talking about Dubai, obviously it's my home too, and Sarah knows that I was raised over there. I was not Right. born. I was born in some other country, but I was raised there. तो जो memories है ना वो बचपन की वो दुबई से बहुत attach होती हैं. तो when she talks about it, I can really You know? feel the emotions, what I had and what I have. If I go, अभी हम recently मिले. ईद से पहले I was there for like quite some time, like थोड़े दिनों की बात थी, but we ought to meet each other. We tried. But हिना को मेरा ये होता है, we start from where we have left, whether it's in Pakistan or whether it's in Dubai. और हमारी हर मुलाकात होती है खाने पे, और खाने से हम कहते हैं चलो just shopping. शॉप So, कर ले यार, it's move very around nice. कर. जरा मुझे बताएं कि एक्टिंग, मॉडलिंग, होस्टिंग, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू विल पिक? एक प्रोजेक्ट हो, एक चीज करनी हो, क्या करें मुस्तकबिल के अंदर? एक्टिंग. I would like to act. So if, that is you what ask. gives you the energy. Yes, I really enjoy it because influencing में ये होता है कि you as an influencer you're still working as a model, right? You're either talking about a brand or you are shooting with that brand. So that I think is covered now.
But as in terms of hosting, I've been hosting red carpet for. इसलिए मैंने पूछा. Yeah, I was hosting a red carpet for an Indian award show as well, which just happened with And Govinda you did and for a Jacqueline. Pakistani show as well, right? With Pakistani, I hosted IPA in Turkey. Yeah, I know. But Dubai mein, I was hosting this Indian I was selling. So how was your experience, like you know, being showcasing someone and you know being a host of a red carpet? It was a big thing for Pakistan. How do you feel about it, being representing Pakistan, और वो भी ऐसी बंदी जो पाकिस्तान में नहीं है, and she lives abroad and hosting for representing Pakistan? Right. So when I was in BNU, I started hosting for Style 360. I used to write content for Style 360. I remember. Yeah, and that's the time when I started hosting red carpet. So I think वो एक वक्त था when I realized that okay, I really like to be in front of the camera, and more than getting interviewed, I like interviewing people because I love to know about people, you know, where they're from, what they like, and of course talk about fashion. It's more candid. I think I love candid chats like we're having. तो जब वो आप करते रहे हो तो a lot of channels also saw that in Dubai, and this is one of the reasons I think I started getting opportunities to work with different other brands and of course channels and stuff like that. Yeah. Nice. Up and above from there on, ये स्टोरी के अंदर तो आखिरी लाइन यही बनती है, up and above from there on. सारा शरीफ हमारे साथ मौजूद है और आप लोग हमें देख रहे हैं प्लस पे हमारी खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर. बातचीत का सिलसिला तो अभी जारी है ना, इसके बाद हमारे पास आपने किचन के अंदर भी जाना है, वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें. तो हम सिंस सारा जो है बहुत एक्साइटेड है खाने के बारे में, तो हम सारा को भी किचन में लेके जाएंगे. Yes. But I want to ask about it. Do you go to kitchen? I love it. Do you cook? I think it's very therapeutic. Very nice. I love it. Different way to look at it. Yes, it's very therapeutic. When I think like I don't have work or I'm getting bored and what should I do, I just go in the kitchen and I start cooking. I'm not going to say I'm the best chef, but Maybe you still say that. I can feel with your stories because Sara की हर दूसरी तो story Instagram में, because we the time नहीं मिलता, we can't talk like daily, but I can just see her Instagram is full of like pictures of having a lot of food stuff around and she's gonna take pictures and she's gonna put it. So Sara, is that your stuff? You gonna cook that stuff or you just take pictures around? So mostly if you've seen high-end restaurants, तो of course उनके owners invite करते हैं. हाँ, घर पे हाँ कुछ खाने में बना लेती हूँ, but I'm not very pro like in terms of biryani and stuff. Maybe बिरयानी की बजाय खिचड़ी भी बन सकती है. कोई बात नहीं. But मुझे पसंद है खाना बनाना, और I think इस पूरी दुनिया में मेरे favorite chef जो होगा is my father. He used to cook amazing food and delicious food. Okay. And I think हमारे घर में जितने भी अगर local friends भी आते थे, whether it's my mom's or my father's, they all would actually request for my father to cook food. Very nice. So, when did your father pass away? In what it's year? about 6 years. 6 years? And were you close to him? What was the Very relationship? close to him, yeah. Extremely close to him. Inshallah. दुआओं में याद रखना. Inshallah. So I'm the youngest and I've been very, very close to my father. I feel like a part of me has left. So Sara, there's a very important question in my mind. When it comes to Dubai, people think that it's all about party. Right. Surviving in Dubai is not an easy deal. Trust me. लोगों को लगता है जैसे पता नहीं दुबई जाके वो पता नहीं क्या achieve कर सकते हैं. Like, you know, we're talking very candidly. People who are looking at us, who are planning to go and settle there. What is the first and foremost advice you will give to them? To settle in Dubai? Yeah. Well, I think उनका vision उनको पता होना चाहिए. कुछ लोग कभी आ जाते हैं दुबई and they're like, we don't know, कोई भी job मिल ऐसे होता है. कहीं पे भी हमें place कर दो, बस हमें हम ये job कर लेंगे, हम वो कर लेंगे. But don't be desperate. Don't be desperate. At least know what's your vision, what you really want to achieve out of it. And आप करना क्या चाहते हो? अब तो अच्छा है because of Instagram and social media. A lot of people have actually, you know, figured out कि we want to be a vlogger or we want to work in this sector or not. But I just feel कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ apply करो और क्या नहीं कर रहे हो. And there needs to be a plan because Dubai is not an easy place to live. It's very welcoming though. They will welcome you. Yeah. It is very expensive, but then each to their own, right? Each to their own. You need to understand which sector would you like to work. I mean, if there are opportunities or not. But I think ये चीज़ें बहुत important हैं आपको जानने के लिए कि आपने क्या काम किया.
ऑब्वियसली ऐसी सही बात है, जाके अगर आपको डिग्रीज होती हैं तो मेरा ख्याल है डिग्री वगैरह को तो पता होता है कि मेरी हाँ ये लाइन है, मैंने इसको परस्यू करना है। बट देन अगेन बहुत से लोग जो आजकल ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब अगर मैं फिगर कोड करूँ तो बैक इन 2021 2.25 लाख थे जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर मूव किया था। 2022 में वही फिगर इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज से 7.5 लाख की होगी थी। तो अब जब ये फिगर इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो ये सारे टेक्निकल लोग तो नहीं है ना कि ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं डिग्री लेके एजुकेटेड एलीट तो नहीं जा रही, सारी जा रहे हैं वो भी हैं, बट देन अगेन लोग बेचारे बस मौका ढूंढते हैं, फंस जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वो उनको होता है कि कुछ भी मिल जाए, जो सारा बात कभी कोट कर रही थी, तो कुछ भी ना सोच के जाएँ, कुछ समझ के जाएँ और फिर मूव करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी मुझे बहुत कॉल्स आती हैं दुबई में, आप यकीन करो मैं कुछ लोगों को हेल्प कर देती हूँ, एंड मैंने ये भी नोट किया कि आप उनको हेल्प कर भी दो ना तो दे आर नॉट थैंकफुल, वो कॉल नहीं करेंगे उनको, वो जाके मिलेंगे नहीं, वो इंटरव्यूज पे लेट जाएंगे, और फिर क्या होता है कि आपका अपना इमेज भी खराब हो रहा होता है। एग्जैक्टली, सो इट इज नॉट अबाउट जस्ट मूविंग टू दुबई, समटाइम्स दे कॉल मी एंड दे से पता नहीं हम आ गए हैं, हमें नहीं पता क्या करना है, we don't know what to do. Sarah, do you have any connections? Sarah, can you place us here? And there are brands I've been calling because I've been working with amazing brands. So if I'm calling their CEOs and managing directors for letting them, you know, place them in one of the sector, they don't go to interviews, they don't show up, or they're like, oh, we are late. But ये पाकिस्तानी सुस्ती वाली जो एक है ना, एक vibe, वो वहाँ नहीं चलती है. You have to be a go-getter. Yeah, you have to be very energetic if you want to achieve something. I mean, it's everywhere. If you're not a hustler, like everywhere, even, you know. Like you asked me, if you're not a hustler, if you're not a go-getter, Dubai is not for you. Yeah. So people who are just watching us, it's a good advice for them. We have to take a short break. Stay tuned with us. You are watching Noor and Ramazan.